Hello student. In my previous video, I started a chapter sources of finance for a joint stock company, and in that chapter I discussed what are the different sources of joint stock company, long term and the short term sources of finance, under which I started the topic equity share, in which I discussed what is equity share, then what are the different advantages of equity share. So in a previous video I talked about the advantages from the company point of view. Today I am going to discuss the advantages of equity share from the investor's point of view. So let's see what are the different advantages from the investment point of view. Investor's point of view. Advantages of equity share from the investor's point of view. The first advantage from the investor's point of view is equity shareholder enjoys voting rights and controlling power over the company. As we had already discussed that equity shareholders are the powerful shareholders of the company, they are the owners of the company and they have a right to vote in the company. So a person who have a right to vote in a company, automatically that person controls the company. So the first advantages from the investor's point of view, that is equity shareholders enjoy voting rights and controlling power. Second merit is the liability of equity shareholder is limited to the face value of shares. Like I already shared this with you. In equity shareholders, if a company, in equity shares, if a company have a profit, then only the company declare dividend to the shareholders. Like in the debentures or in a long-term borrowings, if we don't have any profit in that year, then also we have to make a payment of interest to the outside party, because that is a borrowed fund. So it is compulsory to make a payment to the outside party, and if we are not in the position to make a payment to the outside party, in that condition outside party they sell our assets and they recover their money, but not in this case. In the case of equity share, this is one of the merit कि अगर मेरे पास डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सो आई एम नॉट गोइंग टू सेल द एसेट्स ऑफ माय बिजनेस एंड मेक द पेमेंट. और इनकी लायबिलिटी इसलिए लिमिटेड है क्योंकि जितना इन्होंने शेयर लिया है वहीं तक इनकी लायबिलिटी, किसी और के लिए इनके लिए कोई भी लायबिलिटीज फर्म में, कंपनी में नहीं है. दैट इज व्हाई द लायबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज लिमिटेड. Liability of equity shareholder is limited. Next is, in case successful business, the rate of dividend can be very high. Of course, मैंने बताया था कि the fixed rate of dividend will declare to the preference shareholders. कंपनी में दो तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स्ड होता है. लाइक 100% पे कंपनी ऑलरेडी डिसाइडेड कि 10% डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर टू द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर. तो बाकी का 90% और उससे ज्यादा 100% से भी ज्यादा अगर प्रॉफिट हुई है तो उसमें शेयर किसका है? द शेयर इज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. तो ऐसे कंडीशन में जब कंपनी बहुत सक्सेसफुल बिजनेस कर रही है मार्केट में, तो उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो बढ़ जाता है. So this is another merit from the investor's point of view if they are investing their money in the equity share. Next, equity shareholder have preemptive right to subscribe to new share invested by the company. Preemptive right का मतलब होता है कि कोई भी नया शेयर जब कंपनी मार्केट में इशू करेगी तो सबसे पहले नए पब्लिक को इशू करने से पहले दे विल ऑलवेज आस्क फर्स्ट टू सब्सक्राइब द शेयर टू द शेयर होल्डर दोज हु आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द कंपनी. तो ये उनका प्री एम्पटिव राइट हो गया. तो दिस इज अनदर
merit for the investors, those who invest their money in an equity shares. Next is the value of investment in equity share may increase manyfold during the boom and the prosperity of the company. Boom period जब भी आएगा, boom period you know it very well कि lot of employment is there, people are ready to buy anything at any cost, यानी कि लोगों के पास बहुत पैसा है और वो किसी भी मतलब जो वो डिमांड करेंगे वो मार्केट से वो खरीद सकते हैं. तो दैट इज अ बूम पीरियड जहाँ पे लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों के पास बहुत पैसा होता है. तो ऐसे केस में डेफिनेटली कंपनी भी बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होगी. तो इन दैट कंडीशन जो रेट ऑफ डिविडेंड हमारा है वो बढ़ सकता है. तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर. नेक्स्ट एंड द लास्ट from the investors point of view merit is shareholders are not required to pay income tax on the dividend received from the company. जो shareholders को dividend मिल रहा है उस पे shareholders को dividend पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है उस डिविडेंड पे. Why? Because कंपनी ऑलरेडी उस पे इनकम टैक्स पे करके तब वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पैसा भेजती है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज द फर्स्ट वन? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट एंड कंट्रोलिंग पावर ऑफ द कंपनी. Second, the liability of equity shareholder is limited to the face value of the share. Third advantage is in case successful business, the rate of dividend can be very high. Equity shareholders have preemptive right to subscribe to the new share issued by the company. Next is the value of investment in equity share may increase manyfold during the boom and the prosperity of the company. Shareholders are not required to pay income tax on the dividend received from the company. So these are the important advantages, or you can say merits, of equity share from the company and from the investors point of view. And the next I am going to discuss what are the different advantages of disadvantages, or you can say drawbacks or demerits of equity share. So let's discuss what are the different drawbacks of equity share. Now next we have to discuss the different advantages of equity share. I mean, right now we have discussed what are the different advantages of equity share from the company and the investors point of view. Now we are going to discuss the different disadvantages of equity shares. The first disadvantages of equity share, that is an interference in the management. See, equity shareholders are the shareholders who vote in the company and select the board of directors, the people who are working in the high place in the company. These equity shareholders, they select these persons. So time to time, because they know it very well that we are the owners of the company, and being the owners of the company, they frequently do the interference in the work of the company, and this is one of the drawback, that is interference in the management. Time to time these shareholders, they do the intervention, they do the interference in the management work, and this is one of the drawback. The next is over capitalization. Now see, with the word over का मतलब होता है ज़्यादा, and capitalization, capital का मतलब होता है capital. By the word what you understand? By the word you will understand कि capital का business में अधिक होना, but this is not correct. Over capitalization का मतलब होता है that कि capital के accordingly we are not getting the income. So according to the capital, whatever the capital we had invested in the business, if we are not getting the proper income or the profit on that capital, then we say it is an over capitalization. So this is also one of the disadvantages of equity share. Excessive depend on the equity share, it always leads to be over capitalization.
in your public deposits, you are taking loan from a bank or the financial institution, so this is a borrow. And owners funds means that is retained earning or investing your money in the equity share or the preference share, that is owned capital. So no trading on equity का मतलब क्या होता है कि हमने पूरी तरीके से जब हम इक्विटी शेयर पे भी इक्विटी शेयर को भी इशू कर रहे हैं for raising the capital into the business, so it means we are not enjoying the benefit of trading on equity, and that's why we say this is one of the disadvantages of equity share, that is no trading on equity. Next is high risk. High risk, in page number 43 of your book, it is given that equity shareholders sink or swim with the company. यानी कि equity shareholders जो है वो कंपनी के साथ बढ़ते भी हैं और कंपनी के साथ घटते भी हैं. डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ द कैपिटल बोथ आर अनसर्टेन. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो वी कैन नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड. लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के समय जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, at that time if we have, after making the payment of external party, if we have if something is left, some capital is left, then only in that condition we refund the money to the equity shareholder. यानी कि वो पैसा भी नहीं मिलता, अगर पैसा नहीं है तो वो पैसा भी नहीं मिलेगा. So both are uncertain, dividend and capital both are uncertain in equity. लेकिन जिनको ज़्यादा रिस्क लेना है वो अपना पैसा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. So this is also one of the drawback, that is high risk is there. Why high risk? Because dividend and the capital both are uncertain in the case of equity share. Next is your unhealthy speculations. Unhealthy speculations का मतलब होता है कि those who are sitting in the board of directors, they only know that कि when they have to increase the rate of shares and when they have to decrease the rate of shares. So sometimes these confidential information leaks from the company. Like अगर मेरा ही कोई जान पहचान का पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा हुआ है और वो मुझे कहते हैं कि हमारी कंपनी का शेयर घटने वाला है, तो मैं क्या करूँगी? कंपनी का शेयर घटने वाला है फ्यूचर में, तो मैं क्या करूँगी? फटाफट उस शेयर को, अगर आई हैव शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, तो मैं शेयर को बेच दूँ. क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि आने वाले 5 दिन में इसका वैल्यू जो है वो गिर जाएगा मार्केट में. या फिर मुझे मालूम चल जाए कि इन कमिंग 5 days द वैल्यू ऑफ शेयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज ऑफ दैट कंपनी, तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगी? जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकती हूँ. तो समटाइम दिस हैपन इन द कंपनी. So this called unhealthy speculation. In your book page number 43, it is given that very often there is an unhealthy speculation in the price of equity shares. This is more so during the boom when the price are raising. जब price बढ़ती है उस boom period में इसकी chances speculations, unhealthy speculation की chances ज़्यादा हो जाती है. Directors and the officers of the company may also indulge in speculation on the basis of inside knowledge. क्योंकि inside knowledge किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है. अगर मेरा कोई भी रिलेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है. About the company, innocent and ignorant investors suffer, and in that condition, whenever there is an unhealthy speculation, then there is a chances that कि जो हमारे investors हैं वो यहाँ पर suffer कर सकते हैं. Innocent investors can suffer. So these are the important disadvantages of equity share. The first disadvantages of equity share: lot of interference in the management of equity shareholders. Over capitalization doesn't mean कि capital ज़्यादा हो गया. इसका मतलब होता है कैपिटल तो है बट इनकम नहीं हो रही है, तो दैट कॉल्ड अ ओवर कैपिटलाइजेशन. मीन्स आई हैड इंट्रोड्यूस द कैपिटल बट I am not getting that much income from my capital. So that situation called it as an over capitalization.
No trading on equity. Trading on equity already you had studied in which topic? In the topic capital structure. Factor affecting the capital structure में point number 1 is trading on equity. So here there is no trading on equity. This is one of the disadvantages of equity shares. And the second last is high risk is involved, and the last is unhealthy speculation. So these advantages and disadvantages of equity shareholders, you have to write it properly in your copy, prepare a notes of it. This topic is very important and frequently the question asked in the board examination for 2 marks, for 3 marks and 5 marks. So prepare it nicely, and if you have any doubt related to equity shareholder, please inform me and see your books also. Book will help you. Now the next source of finance for a joint stock company, that is a preference share. So let us discuss what is preference shares and how it is a source of finance for the joint stock company. Now the topic is preference share. What is preference shares? When we had started this topic equity share, there I made you understand what is the difference between equity share and the preference share. See, equity shareholders are the powerful shareholders of the company because they have the right to vote in the company. But preferential shareholders, they do not have a right to vote in a company. That is why they are not a powerful shareholder, and moreover they don't have a control over the company. But preference word is preferential share. So they have a first preference in the company's profit. They get a fixed rate of dividend from the company, and before company give any dividend to any shareholders, the company give first preference to the preferential shareholders. यानी कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले कंपनी सबसे पहले जो डिविडेंड पे करती है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, दे विल मेक पेमेंट टू द प्रेफरेंशियल शेयरहोल्डर. सेकंड थिंग क्या है? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी रिटर्न द कैपिटल फर्स्ट टू द प्रेफरेंस शेयर एंड देन टू द equity shareholder. So that is why their shares called it as a preferential share, क्योंकि सबसे पहले एक तो उनको डिविडेंड में सबसे पहले डिविडेंड मिलता है, और जब कंपनी लिक्विडेट होती है उस समय भी उनका कैपिटल इक्विटी शेयरहोल्डर से पहले उनको मिलता है. ठीक है. Now let us discuss the different type of preference share. The first type of preference share, that is a cumulative preference share. Cumulative preference share. Then second is your non-cumulative participating preference share, non-participating preference share, convertible and non-convertible preference share, redeemable and irredeemable preference share. Now first is cumulative preference share. A shareholders who take cumulative preference shareholders, they have the privilege that if a company is in loss in that year, the company not gained a profit that year, so their dividend they will get in the next year. So we can say that their profit is accumulated. यानी कि अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ पर्टिकुलर ईयर में और कंपनी को प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देना है, तो कंपनी उस साल देकर उसको नेक्स्ट ईयर देगी या फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में देगी. इस टाइप के शेयर्स को वी कैन कॉल्ड इट एज ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. बट दिस फैसिलिटी इज नॉट देयर इन द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. आज प्रॉफिट हुआ इस साल, तो कंपनी विल गिव यू द डिविडेंड एंड नेक्स्ट ईयर दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द डिविडेंड. सच टाइप ऑफ शेयर्स आर नोन एज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपेटिंग preference share. Participating preference share means after making the payment of dividend to the preference shareholders and equity shareholders, if any surplus remains and the shareholder had taken participating preference share, so this shareholder is eligible to participate in the surplus प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. यानी कि उस सरप्लस प्रॉफिट में भी इस तरीके के शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं. बट दोज हु हैव टेकन
non-participating preference share, they are not eligible to get a share in the surplus of that profit, surplus of that company. Next is your convertible and non-convertible debenture. Convertible debenture shares means that after a certain period, those who had taken convertible shares, they have a right to convert their preference shares into a equity share. यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद उनको ये राइट है कि अगर वो चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दिया है, यानी कि दे आर नॉट एलिजिबल, दे डोंट हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर. नेक्स्ट इज योर रिडीमेबल. रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ मनी, यानी कि I already discussed that preference share is the hybrid of equity share and debenture. दोनों का क्वालिटीज है उसके अंदर, फीचर्स जो है डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स के फीचर्स यू विल गेट इन प्रेफरेंस शेयर. जैसे इक्विटी शेयर में हम डिविडेंड तब डिक्लेयर करते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट हो. ऐसे प्रेफरेंस शेयर में भी है कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगी तो ही कंपनी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड डिक्लेयर करता है. तो ये जो क्वालिटी है वो इक्विटी शेयर से आ गई. डिबेंचर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है. सिमिलरली द रेट ऑफ this dividend is also fixed in a preferential share. That is why we say that preference share is the hybrid of equity share and the debentures. So redeemable का मतलब होता है after the expiry of the time period. जैसे मैंने 5 साल के बाद आपको बोला है कि I will make you the payment of preference share. तो 5 years के बाद the time period is expired. तो it means I have to make a payment to that shareholder. जो शेयर होल्डर को मैंने 5 साल का टाइम पीरियड दिया था उस शेयर होल्डर को मुझे पैसे पे करने पड़ेगी. तो दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. बट इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है this capital can be returned by the company only at the time of liquidation of a company. So this is known as an irredeemable preference share. So we had discussed what is preference share, then the different types of preference shares like cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, redeemable preference share, irredeemable preference share, participating preference share, then non-participating preference share, then convertible and non-convertible preference share. Prepare these notes in your copy. This topic is very important and frequently the question asked in the board examination. And if you have any doubt or any problem, if you are not understanding any of the topic, inform me. I will help you. And please take the help of your book also. And that's all for today.